Yes. So, it's a great pleasure to have you all with us today. And we are soon going to start the full talks. I am so sorry that we could not do it yesterday. As a ritual, we always have it on a Wednesday from 8:30 p.m. to 9:30 p.m. So, the secrets of full life, meaning a fearless, unstoppable, limitless, and loving life. So, under the banner of Secrets of Living a Full Life, we do subtopics which helps you to live this kind of a life. So, today we have a very interesting topic which is called as the method to madness. So, what is madness? What is the method to madness? We will soon be doing it. And we also have an esteemed, distinguished guest with us. He is none other than Nazar Khan. Welcome, Nazar, to the Secrets of Living a Full Life. Thank you. So, it's a great, a moment for me because I always wanted to have you on the show, and because of due to so many technical problems and personal problems, we couldn't make this happen. But I'm sure, um, this was meant to be, and that's why you're here today. So Yes. he's an actor, he's a director, he's a counselor and psychotherapist, he's also a coach, and he's phenomenal. He's also a colleague of mine in psychodrama. We learned psychodrama together. So there are going to be a lot of elements that we can share with you today. So thank you once again for coming, and we will take this forward. So, dear audience, my sincere apologies for not having come live yesterday. It just was not possible. And I said, let me just be okay with the fact that I cannot be perfect all the time. So, allow me that. And today we are having. So, please remember that in case any Wednesday we skip, we will definitely be having it on a Thursday, the same time, same place at my channel, which is called Viji Tushar. And yes, we are here to ensure that you get some value out of these sessions and make your life a full life. So let me share with you what exactly does literature say is the method in madness. I think I'll have to go back and add the computer sound, otherwise you won't be able to hear. Just a minute. Okay, I'm done. Yes, so take a look at this video. I think, yes. Today's expression is a method to the madness. This is a very common idiom meaning that though something may look chaotic or disorganized, it has an underlying structure or reason for being. Imagine walking into a science lab with lots of instruments. You see a scientist running from table to table, carrying different chemicals and performing different experiments. His lab may look like madness or crazy disorganization, but there's a clear purpose behind what he's doing that makes sense to him. Like the scientist's lab, any situation that has underlying structure despite looking problematic can be described as having a method to its madness. A method to the madness. A method to the madness. A method to the madness can be used in both professional and casual situations. Why are all of the dishes, cups, and silverware on the floor? Yeah, I would like you to take a better look at what is being explained here. And then if any such incidents come to your mind, you can share it after the video. There's a method to my madness. I'm just reorganizing my kitchen. The boss must be crazy. He's going to sell the most profitable division of the company? Don't worry, there's a method to his madness. The hockey coach's plays look very confusing. But he always wins. There must be a method to his madness.
Are you sure you'd rather go to school than to the beach on such a beautiful day? I know it seems like there's no method to my madness, but I really enjoy the class. Well, that's the end of this lesson. But if you feel confused about how to... So, got an idea? Yeah? Yes, miss. Vidhi, I think you need to rotate your camera. And Kanishka, are you there? Yes, ma'am, but I have it switched off because my Wi-Fi is a little weak. Oh, no problem. Absolutely no problem. So yes, what is your idea, Tanush, or your understanding after you've seen this video as to what is the method to madness? Basically, something, it has become a schedule, a routine, a thing we go through every day. Other people might look at it and find it confusing, weird, or even like mad. But to us, it's a routine now. It's a daily habit we have. So what exactly is this madness is to some people we may come across as being very chaotic. Yes. क्या कर रहा है कभी ये कर रहा है कभी वो कर रहा है कोई fruition नहीं आता है उसके काम का. These are the comments that people tell you, but you know what you're doing, and ultimately there is some conclusion in your mind that ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे तो ऐसा होगा. So you are clear about what end goal you're getting. But the madness that is there is also the chaos that is there is creating some kind of a structure. Like, for example, would you like to go to the beach or would you like to go for your class? So everybody will obviously want to go to the beach. But the thing is, something is more exciting than the beach for that particular kid, which cannot be understood by others. So that is the method which seems to be mad for people. So there is that method in that madness. So that method is only known by the person. Like, for example, I used to sit to study. And when I used to sit to study, I would have so many books around me. This book is there, this book is there, this book is there. And if you have to make a project, literally, I would take some parts of it here, some parts of it there. And people say, what a mess you're sitting in. But that mess has some sense for me, which may seem like a mess to others. And the beauty of it is that, because I've been doing things like this, even when I am into training now, the maximum work I do is in the beginning where I collect all the resources, all the data. And that takes a huge chunk of my time. But I know that I will make sense out of all this data and present the best product to the client. So all this madness that was happening in my life has brought about a new creativity, and it is delivering things in a different way. And that has become my USP. Right? So all the audience watching out there might be times when you thought that, okay, I did all these things. It's a huge mess and it looks like stupid. There is no connection between things, but there is always connection between everything that you do or everything that you experience. Every experience is important and every experience has something to offer. So if at all things are chaotic in your life, just chill and say, no, there is a method. So the beauty is when you're able to discover that method and use it for yourself in an intelligent way, and you will be super awesome success. I know it is very deep. विधि को शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी धीरे धीरे. जैसे हम एग्जाम्पल्स लेंगे हमको पता चलेगा. So Nazar, what do you think? Do you have any inputs here? Yeah, so when I saw this, it is really a beautiful thing. As an actor, when director told me that, when he tells me that this is the scene and this is the dialogue and this is the co-actor and this is the makeup and this is the costume. So first, being an actor, I get,
anxiety, discomfort, and what is how to perform here. I have to take the lights and take to camera and the moment, and I must reply to the cue. Last line, I must very attentive to listen to that line of Correct. co-actors. So there are so many confusing things, there are madness like is going on there. Like, and Yeah. it is always there, palpitation that I have to perform here, I have to perform here. But you've And been performing for so many years. yeah, but that's why I'm coming to that point, for so many years. But as camera directors say action, that automatic some method works, and I Ah, perform so fantastically. So after that shot, people comes and say, wow, you created, like, this shot is fantastic. How you took that pause, and I don't know. I have not planned for that. I was so correct. confused that what to do and what not to do and how to do, and these things. I'm trying my method, that acting method acting it is called, whether with Correct. my dialogues, with the expression, with the hand movement. What should I do? What method should I use? So I'm, madness is there, Hmm. and that madness creates some nice thing, like, that is Yeah. what I got from your from your video. Correct. Correct. So the moment the person says, action, you are just into that zone, and all that chaos just organizes itself and Yes, creates a method with it. absolutely, absolutely, absolutely. And it is such a divine thing that you must be surprised sometimes. Are itna acha maine kaise kar diya? Yeah, yes. Can you give some example of any particular scene or something that you did, which I think could be of great value to the audience out there? No, there are a lot more. Like I did around more than 50 films and more than 1,000 episodes. Every time, I'm telling you, I did around 750 shows of play, drama. Hmm. Before I'm taking entry into the theater, whether it is the first show or 100 show, I did 300 one play. I did 300 shows of one play. So on that 300 show, still my chaos is there, because but, one of my senior told me that that chaos is, it shows that you want to perform best of your capacity. So Correct. that is anxiety, that nervousness, that is, you want to do good, you want to perform well. So that is always there with any, like, it's not any example, whether I'm in Ram Lakhan or whether I'm in Rang De Basandi or whether I'm in a Crime Patrol or whether I'm in a Ek Thi Begum thing or I'm latest File 323. It is always there. Hmm. So I now understood what you said, and automatically my training or my experience, what I learned, Hmm. it automatically get sequential, and Yeah. so that is what I want to say about it. Yeah. Great. So, most of the times, many people who are doing great things have this craziness within them. Just imagine when Nicholas Tesla put his entire money into SpaceX technologies. Everybody said he's foolish. It's madness for you to do like this. But he had something in his mind, and that method actually came out, and he was able to get back his money. Right? So, everything that happens to us as it is as perfect as it should be. So, adding this on to our own life, if there have been times when you felt you goofed up and you said, oh my God, I should not have done this, or this has happened to me, then, that was the maximum that you could do. And you should not beat yourself for what happened, because there was a reason for that. Like, I did my BSc in physics, and then I did my MA in English. So I thought, oh my God, all my 5 years I have wasted being a science student when I was supposed to be an art student. And I said, she itna saal mera guzar gaya. Had I taken arts before, I would not have wasted my 5 years.
But then I realized that madness that I had, where I used to go through anxiety attacks because कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, सब bonkers जाता था दिमाग के ऊपर से. और जब actual में मैंने physics तब सीखा, when I started teaching children physics. So that was the case. But I realized that I got a time to revise my subject, and because I learned science, I had a scientific way of doing things. So arts came in handy, and now I'm actually in the arts field, the psychology field. But the science behind the psychology is actually easy for me because I was a science student. So be connecting the dots, I'm realizing all that madness, that pain that I went through, the anxiety that I went through, there was a method in it. देखो, कोई जगह पे जाना है तो बहुत सारे रास्ते होते हैं. तो ये रास्ता है. वो रास्ता शायद सीधा नहीं है, पर रास्ता जरूर है. इसीलिए उसको बोलते हैं ना, मेथड टू द मैडनेस. एंड it is not enough to just understand the method, but it is important to, find out the method in the madness. Just imagine if you find out the method in the madness, you will be so stress free. You will not judge people. You will not judge your own self. You will be able to forgive everyone. Isn't it beautiful? Right? Yes, miss. I'm so glad, Usha, that you joined. It's been a long time. I would like to know your inputs on this particular topic. Usha, can you hear me? Okay, let's take Kanishka. Ma'am, What is your understanding about the method in madness? it's basically like, it's almost like you know how to do what you want, like you will figure it out, like we have it figured it out, but we just doubt ourselves because it seems like a mad method, but then it actually works for us. So that's what I've understood. So all the youngsters out there who are just figuring out your lives, and you hear comments like, what are you doing? You have still not figured out what you're supposed to be doing. Don't worry. Once you try to see the method in what's happening around the madness around you, you will definitely be able to find out your path. So it's a part of the process. And once we accept that process, it becomes easier for us. Coming back to Nazar, I would really like to know, which was the scene in your life which you said, वाह, एक और chance मिलता है यार ये करने के लिए. नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो सीन किया ना, मुझे पता है कि अपनी जगह वो बेस्ट है. इससे बेटर भी हो सकता था, इससे नीचे भी हो सकता था. उस वक्त जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड एंड माय पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड से उस वक्त जो निकला ना, वो बेस्ट था. सो ऐसा कुछ नहीं. लेकिन अभी जो मेथड ऑफ व्हाट यू से ना मैडनेस, सो आई एम राइटर आल्सो. I wrote some few films and some few episodes of some web series. Okay. So you can watch on YouTube. The name of that series is Seek, SEEKH. It depends. वो एक स्वामी नारायण महाराज ने कुछ सब धर्मों का अभ्यास करके 225 प्रिंसिपल बनाए थे. उसके 4 प्रिंसिपल मैंने लिखा हूँ. सीक, SEEKH. तो वो बिलीव मी मुझे लिखने दिया उसने कि भाई एक था कि कभी भी उसका एक टॉपिक था लाइक कि ना, इफ यू वांट टू टेक कुछ भी लोन किसी से लेना, भले सगे या किसी को कुछ पैसा देना, भले बेटा हो या बाप हो या एनीवन, वो लिखित में होना चाहिए. ये सारे धर्मों के नहीं, हमारे मुस्लिम में भी और हर में भी के लिखित में और 2 गवाह होने चाहिए ताकि वो मुकर न जाएगा. तो वो तो एक बंदा था जो अपने भाई को बहुत सारा लोन दे देता है और वो मुकर जाता है क्योंकि वो लिखित में नहीं.
तो उसके ऊपर Correct. पूरा तो ये मुझे सब्जेक्ट दिया गया और यकीन मानो लाइक बिलीव मी 15-20 days आई एम सिटिंग विद द पेन एंड पेपर कुछ नहीं आ रहा था कुछ पेपर पे नहीं उतर रहा है मैं परेशान हो बोल रहा भाई लिख के हुआ क्या मैं नहीं कोई नहीं आराम से आराम से तो आराम से बोल रहा था 1 महीने बाद वो अचानक टक हुआ धड़ 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 3.5-4 घंटे में मैंने पूरा एपिसोड लिख दिया so I can relate that this is the method of madness you have to sit you have to think you have to go through that process Correct. of that painful process so if you want to achieve something you have to go through that process Right. you will not get okay 1 + 1 = 2 it's not इसमें नहीं होता है Correct. yeah, you have Correct. to go through that process and that process will lead you to the result and then you understand oh this is the method if you plan no this is the method I'll go 1 now second stage 2 second third stage 3 4 so it might not work I don't know it might work but I think so like in madness means what there is no ganit there is no method there is no Logic. yeah So actually, if you reminded me about it, like now I am giving a proposal to a company and I have prepared a plan. So when the first draft I have given, oh no, it is not supposed to be like this. It is supposed to be like this. I make that change, cut off certain things. And then I said, okay, this is the plan. So then they've asked me for a long plan, long entire year's plan. So I'm just thinking, okay, I have done this, but until I know this, how will I do the next step? So again, when I started making the part of it, again I'm saying, nahi, isko abhi aur change karna padega. Aise change karte karte, like, it was real madness where I had to convince myself that it's okay. Then ultimately they told me, okay, you give me just the first 2 steps. That's enough. Because बहुत बार क्या होता है ना, हम long के लिए plan करते, but उसके लिए वापस replan has to be done. So you have to make a number of drafts before you get a final masterpiece. yeah. But in this process, what happens is very few people have the consistency and the endurance to continue changing and making it better and better and better. Yeah, true. So, if with your permission, I would like to ask Tanush, where you stuck, you think, like, in your life or up to this time, where कहाँ तुम्हें लगा कि यार यहाँ मैं अटक गया था और मुझे मिल नहीं रहा था और ये बड़ा मैडनेस जैसा जिंदगी हुई थी. Tanush, can you share your experience so we can work on Tanush. it sort of thing? Honestly, I don't think I've gone through such a thing. I can say, for example, we were told from our sirs where I'm learning science, where if you're stuck on a sum, do not search it up on Google or ask your friend for the answer. Stay with that sum. If it takes half an hour, 1 hour, just stay with the sum. And I was like, sir, but why do you have to do this? इसका क्या इससे क्या होने वाला है, right? But when you do it, you realize that there are different ways you can think. You can look at the sum in different ways. So I realized that it's opening my mind to explore new things. It's opening my mind to look at the sum in a different way. So that was madness, but in silence, because I was going mad, not getting the sum correct. Fantastic, very nice. When you challenge, when you ask question to your brain, when you give some task to your brain has to work. So first of all, brain will go for the old methods. When you add something, when you give some questions, some queries, so you have to think about it. So like an artificial intelligence, how you give some one topic and 10 question and answer comes, like sort of thing. So that is true. Like when you have to sit with the problem, you have to think continuously about it, and one fine time you get like, oh, that's it. So that is really great. And one should not get bored or अरे यार ये क्या पागलपंती है यार, ये क्या यार इतना फट से क्यों नहीं आ रहा. So
allow yourself to go through that process, and that beauty, that joy you will experience when you will get that answer. Great. Correct. Thank you, Tanush. Thanks, Tanush, for sharing. Thank you, Tanush. See, I have such intelligent students with me. What I must say that it's like, I learn so much from them every day. So at Management Me School of Confidence, we have such beautiful people. And, I just look forward to meeting them, just as they look forward to meeting me. So Wow. it's like, ek din bhi chutti ho gaya, to लगता है, "Abhi, next class kab hai?" Like, we really explored. And the other day we did something really maddening, and it came out so beautifully. Frankly speaking, Tanush and Kanishka, I did not know how it's going to work. So we had to select topics for public speaking. And the topic what we suggested was, if I were a rubber band. And they came up with such creative answers. It was so beautiful. I myself did not know why did I choose that. But now things are working in such a way that, ये दिमाग में जो भी madness चल रहा है ना, बस वो बोल दो, because दिमाग को already पता है कि इसका result कैसे आने वाला है. Great. Fantastic. And another one, what was the next topic? Kanishka, you remember? If I was a ping pong ball. If I were a ping pong ball. So it was beautiful. We used metaphors in such a great way, that. And what was the dialogue that you said, Kanishka, for ping pong ball? I think it was some bouncing back in life. The way. It was about bouncing back and related it to life. So whatever way you hit me, I'm definitely going to come back. So when that metaphor was used, it was literally like subconsciously imprinting that fact that even if you have had challenges, you can definitely pull yourself back at any point of time. So that's how we had our learnings. So Nazar, any particular incident in your life where you felt, like, एक point aa jata hai jab you want to just give up? Because I think you went into the film world, and then there were a lot of challenges that you faced, and you came to a point, but then you didn't want to leave it. So how did you overcome that point? Because it's not easy for everyone to do that. Yeah, absolutely true. When as an actor, sometime in 2005 or something like that, I felt I was so depressed, so anxious. There are so many panic attacks, and why it's not happening. People telling me you are looking good. You are now my hair. You've got more wisdom. Yeah. So what lies within is much more than what lies without. Yes. So people used to tell me that तू hero लगता है यार, क्या है, क्यों नहीं मिल रहा lead role तुझे, क्या है यार, तेरे में क्या problem, क्या देख, something like that. I said कि मेरे में क्या problem है, I can't see anything यार, मैं काम खाली एक था कि वो जाके बार-बार काम मांगना, I don't like it. मेरा काम अच्छा है, something like that. So after that thing, depression, anxiety, and panic attacks, and suddenly, one fine day, when I thought ki everything is finished, like there is no opening now, there is khatam, and I kuch hone wala nahi hai, something. When I gone to that position, na, अचानक कोई अच्छा काम आ जाता है. अच्छा. So ये repeatedly हुआ है. हाँ. जब आप टोटली टूट जाते हो, खत्म, ये ना अभी कुछ होता नहीं, और अचानक सामने से कुछ ऐसा लग रहा है कि भगवान कोई रुक जा भाई, परेशान मत हो, रुक जा, इतना टेंशन मत ले, वैसा कुछ दे. Something I don't know why this, but जब मैं टूट गया पूरी तरह से और एकदम खत्म हुआ, तब काम आता. So after doing my after 2005, doing my transaction analysis, REBT and CBT, and then landmark ontology. Can you explain what is transactional analysis? I have learned it in my psychotherapy, but I would just like you to share it with the audience as well. Yeah, so transaction analysis means a transaction between three personalities.
So there are in our means we हम लोग है ना 3 पर्सनालिटी से बने. एक है पैरेंट, एक पैरेंट होता है उसको बोलते हैं ईगो स्टेट. सो एक पैरेंट ईगो स्टेट होता है, एक चाइल्ड ईगो स्टेट होता है और एक एडल्ट ईगो स्टेट. करेक्ट. सो पैरेंट ईगो स्टेट में 2 चीजें होती है. एक होता है कि क्रिटिकल पैरेंट. एक सेकेंड. So it's PAC, pack, you remember? Pack, So parent, adult, and child. yeah. These are the 3 personalities which we have within ourselves. So Yeah. our parent thing, copy paste from our parental figures. Like Correct. जिसके अंदर वो बोलते do this, don't do this, do this, don't do this. तो ये है ना critical Instructions. parent. It is called critical parent. Hmm. जो हमेशा बोलता है ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये मत करो. So that critical parents, आप जब किसी को बोलते हैं ना ये कर, ये मत कर, तो समझ जाना आपका critical parent काम कर. एक सेकेंड, ये बहुत जरूरी है. विधि, I would like to take you. किधर हो तुम? तुम उल्टा घूमो जरा, और एक बार घुमाओ फोन को. हाँ, बस. अभी इन्होंने जो बोला ना, पेरेंट, अडल्ट और चाइल्ड, तो इन्होंने बोला क्रिटिकल पेरेंट जो होता है वो बोलते हैं कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे मत करो. कुछ आ रहा है याद? ओके, अभी ध्यान से सुनो. सर कंटिन्यू प्लीज. या सो क्रिटिकल पेरेंट हमारे अंदर हमेशा ये हमारे पेरेंट फिगर लोगों ने, बड़े भाई ने, चाचा, मामा, टीचर, कोई बोल दिया है और वो हमने बैठ लिया कि हाँ हमको बोले तो ऐसा बोलते हैं, वो कॉपी पेस्ट हो जाता है. एंड देयर इज अनदर पेरेंट व्हिच इज कॉल्ड नर्चरिंग पेरेंट, जो बोलता अलाउ करता ओके गो अहेड, कि जो बोलता है अच्छा ऐसा ओके हाँ हो सकता है. सो दैट इज कॉल्ड नर्चरिंग पेरेंट. फिर चाइल्ड में जब आते हैं ना, हमारे अंदर का जो चाइल्ड रहता है उसमें एक चाइल्ड रहता है जो अडेप्टिव चाइल्ड, यानी पेरेंट जो बोल रहा है ना डू दिस, डोंट डू दिस, हम अडेप्ट कर लेते ओके. वो कुछ बोलता नहीं, वो तो बैठ के ओके करता है. तो जो बच्चे चुप रहते, बोलते टाइम डर लगता है कि पता नहीं क्या बोलेगा, क्योंकि उनके पेरेंट फिगर उनको डांट दिया होगा या कुछ डर रहा होगा. तो जब बड़े भी होते तो बॉस कुछ बोलता है और तुम्हारा जवाब सही भी है, यू कीप क्वाइट, बिकॉज वो एक अडेप्टिव वो चाइल्ड उसमें होता है. तो ये चाइल्ड का एक पार्ट होता है. लेकिन जैसे बहुत ज्यादा भी अगर कोई बोलते रहा, वो चुप बैठता लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो ब्लास्ट हो जाता है वो चाइल्ड. तो इट इज कॉल्ड रिबेलियस चाइल्ड. ओके, वो रिबेल करता है कि नहीं मेरे को नहीं है. एक सेकेंड. विधि, रिबेलियस चाइल्ड ध्यान में आया? रिबेलियस चाइल्ड क्या आपने कहा इसलिए मैं नहीं करूंगी? तो अपने आप को आप देखो, रिबेलियस चाइल्ड में भी जा रहे हो, आप एडेप्टिव चाइल्ड में भी जा रहे हो, राइट? सर्टेन टाइम्स में आप सुन रहे हो, वो जो बोलते हैं वैसे ही करते हो. सर्टेन टाइम्स में आप रिबेल करते हो नहीं. अभी आपने बोला ना कल गुस्सा करके खाना नहीं खाया ना आपने, आज सुबह. हाँ, तो वो हो गया रिबेलियस पेरेंट, रिबेलियस चाइल्ड जो खाना रिबेलियस चाइल्ड, सॉरी रिबेलियस चाइल्ड. हाँ, तो ये हमें ना, ये अगर पता चल जाता ना कि ये मेरा रिबेलियस चाइल्ड, कि मुझे नहीं खाना, वो बोला रिबेल कर रहा है, तो अगर हमने देखे करके भाई रिबेल क्यों कर रहा है, तो वो पेरेंट ने मुझे कुछ डू दिस एंड डोंट डू दिस किया हो और मुझे नहीं सुनना है. तो इसके अंदर काम आता है कि एडल्ट, जो एडल्ट ईगो स्टेट आता है, कि मेरे पेरेंट ने बोला कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम ऐसा है वैसा है. तो मेरे एडल्ट ने ये सोचना शुरू किया कि इनके भी माँ बाप ने इन्हें ऐसे ही सिखाया हुआ है, इसलिए ये ऐसी बात कर रहे हैं. तो ये हमें ये देखना है कि ये जो बात कर रहे नाम के विधि है ना इनका, विधि. हाँ, तो विधि ऐसा मत करो, विधि ये मत करो, विधि ये मत करो, जब वो बोल रहे हैं ना, तो अगर उनके बातों के पीछे उनका इंटेंशन क्या है, अगर आप देखोगी ना, तो इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव रहता है. तो हमारा एडल्ट अगर वो पॉजिटिव इंटेंशन देखना शुरू कर देना, तो वो बहुत अच्छे से डील कर सकते. सो एडल्ट वही कहता है हेयर एंड नाउ. एडल्ट का काम है हेयर एंड नाउ, अभी इस वक्त में कैसे डील कर सकती हूँ, प्रेजेंट में. हाँ, कैसे मैं इसको डील कर सकती, कैसे मैं हैंडल कर सकती हूँ. या खुद के मेरे अंदर ये आ रहा है कि नहीं मुझे गुस्सा आ रहा, नहीं आ रहा, तो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, कि सपोज मुझे एक पर्टिकुलर चीज करनी, वो मुझसे नहीं हो रही है, तो पॉजिटिव इंटेंशन क्या है, मुझसे वो चीज होना चाहिए.
तो जब आप बोलते हैं मुझसे वो चीज होना चाहिए और नहीं हो रही, तो वो गुस्सा आ रहा है। लेकिन जब आपने अपने अपने खुद के पॉजिटिव इंटेंशन में देखा कि मुझे तो वो मेरी इच्छा है कि मैं वो करूं, मुझसे नहीं हो रहा है, इट्स ओके, आई एम ए ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन इज एर, क्या, ई डबल आर, अर अर, हाँ, मेरा इंग्लिश था अर वर्नाकुलर। मीन्स टू ह्यूमन इज, अर मीन्स गलतियां करते हैं हम। गलतियां करने वाला, तो मैं गलती करने वाला इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है ना, सो व्हाट, अपने आप को क्यों टॉर्चर करना है? या पापा मम्मी से गलतियां हो सकती है, वो इंसान है, उनसे गलतियां हो सकती है, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों बोला, ये हमको नहीं। उस वक्त उन्होंने बोले, फिर थोड़ी देर बाद आके वो गले पे हाथ भी डालेंगे, मिठाई भी खिलाएंगे, अच्छी बातें भी करेंगे। सो हमको याद है तो हम्म, तो वो, उसको अगर छोड़ना है तो एडल्ट में रहना बहुत जरूरी है। एडल्ट का मतलब है हेयर एंड नाउ, दिस मोमेंट अभी क्या है। तो जैसे आप दिस मोमेंट की तरफ ध्यान शुरू कर दे, हेयर एंड नाउ, अभी मैं क्या कर सकती हूँ, अभी मुझे क्या करना है। हो सकता है कि उस वक्त मुझे चिल्लाना पड़े, ऐसा नहीं कि हाँ गुडी गुडी पापा बस हुआ, लेकिन उसके अंदर गुस्सा नहीं है, उसके अंदर इंटेंशन क्या है, मैं जो बोलूंगी तो पापा शांत हो जाए। तो कई बार वो गुस्सा भी जो है वो एडल्ट वाला गुस्सा होना चाहिए, जिसको बोल सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो गुस्सा है। करेक्ट। तो एडल्ट जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला होता है, उसमें वो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ गुडी गुडी बात करे। सो दीज आर द थ्री थिंग्स। और चाइल्ड में एक और पार्ट होता है, एक एडेप्टिव चाइल्ड होता है, एक रिबेलियस चाइल्ड होता है, थर्ड होता है फ्री चाइल्ड। फ्री चाइल्ड का काम होता है कि उसको जो अच्छा लगता है वो करता है। करेक्ट। जो फ्री चाइल्ड है ना, वो कलाकार होते हैं। फ्री चाइल्ड होता है कि आपको कहीं घूमना अच्छा लग रहा है, कुछ डिजाइन बनाना अच्छा लग रहा है, किसी से बहुत अच्छी बात है, कविताएं पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ क्रिएटिव चीज। तो करेक्ट। फ्री चाइल्ड है ना, उसमें वो रहता है, उसको लगता है कि आज कूदू, आज बारिश में भीगू, अच्छा लगता है। तो फ्री चाइल्ड को हमने हमेशा नर्चर करना चाहिए। तो जब आप फ्री चाइल्ड को नर्चर करोगे ना, तो अडेप्टिव चाइल्ड और रिबेलियस चाइल्ड का इंटेंसिटी ना कम हो जाता है। और वो जब नर्चर करते तो आपका एडल्ट एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। तो करेक्ट। दैट इज ऑल जैसे अबाउट। जैसे है ना, विधि अपने फ्री चाइल्ड को नर्चर कैसे करती है? वो क्या खाती है तो शाम को? nachos, हाँ मंचूरियन। हाँ, मंचूरियन। एक पूरा दिन काम करती है ऑफिस में, और सब जब जाती है ना, तो वो बोलती है कि मैडम आप जाओ, मैं चल के जाऊंगी। बोली, क्यों चल के जाएगी, मैं ड्रॉप करती हूँ। तो बोलते नहीं नहीं, मैं चल के जाऊंगी, है ना, मंचूरियन खाएगी, मुझे मजा आएगा। सो उसका वो फ्री चाइल्ड है कि भाई उसको जो मजा आता है खाने के लिए, वो उसको चाहिए होता है। एंड शी एक्चुअली, आई शुड सी द, अभी भी आप देख सकते हैं स्माइल उसके फेस पे, कि मंचूरियन के नाम से कितना मजा आता है उसको। सो दैट इज द फ्री चाइल्ड। क्लियर विधि? Yes, miss. या तो ऐसे मंचूरियन खाने के लिए फ्री चाइल्ड मत बनना। इनका कहने का ये मतलब था कई बार हो सकता है कि वो उसको सिर्फ फ्री चाइल्ड भी नहीं हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन निकालने का भी एक मेथड हो सकता है, गुस्सा बाहर निकालने का भी एक हो सकता है, आउटलेट भी हो सकता है। वो डिपेंड्स है, लाइक कभी गुस्से में आके ना एकदम तीखा बनवा दो ताकि मुंह जले। हाँ, देखा मैंने। एब्सोल्युटली। सो ये मतलब ये भी रिबेलियस है, मंचूरियन खाना भी रिबेलियस है। सो अभी अभी इसके रिबेलियस चाइल्ड के ऊपर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सो ये, आपको अडल्ट मोड से बिहेव करना पड़ेगा। हाँ, तो एडल्ट जैसे मोड ऐसा होता है कि हेयर एंड नाउ इस मोमेंट में क्या किया जाए। और ये है टीए का पूरा। टीए में बहुत सारी और बहुत डिटेल में चीजें, जैसे करेक्ट। कुछ आपके ड्राइवर्स होते हैं, आपको वो ड्राइव करते हैं, कुछ जंक्शंस होते हैं कि जो आपको रोकते हैं, तो समथिंग, बहुत सारी चीजें, बहुत लंबा चक्कर है टीए का। और दूसरा करेक्ट। है आरईबीटी। आरईबीटी में ये है कि रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। उसमें करेक्ट। होता है कि जैसे अभी ऑफिस में कुछ बोला किसी विधि को, बराबर है, और ये एक्टिवेटिंग इवेंट हुआ, और कंसिक्वेंसेस ये हुआ कि मुंह जलाने वाला मंचूरियन उससे खाए। तो ये ABCD पैटर्न है। ए इज एक्टिवेटिंग इवेंट, सी इज कंसिक्वेंस। तो कंसिक्वेंस में उसने क्या की, मुंह जलाने वाला मंचूरियन चाइनीज खाई। लेकिन उसके पीछे बी है, बिलीफ है। बिलीफ ये है कि मुझे इतना बोला, मुझे गुस्सा निकालना है कहीं,
तो मैं अपने आप पे निकालूंगी, मैं अपना मुंह जला दूंगी, ये बिलीफ है। या सेकंड बिलीफ है कि उन्होंने जो मुझे बोला ना, उन्होंने बोलना नहीं चाहिए, शी मस्ट नॉट टॉक लाइक दिस टू मी। This to me. तो वो मस्ट जो है ना, जो मस्ट आता है ना, वो आपकी बैंड बजा देता है। तो वो फिलहाल आपका तो विधि की बैंड बजी हुई है, क्योंकि आप वो सभी चीजें बोल रहे हैं जो विधि के लिए लागू होता है। ठीक है, परफेक्टली ओके। एक इंसान है, इंसान हर पहली बात तो एक समझ लो कि साइकोलॉजिकली 99.9% कहीं ना कहीं बीमार होते हैं। 0.1% जो साधु महात्मा है ना, वही साइकोलॉजिकली सेन हो सकते हैं, वरना एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड Is इज, abnormal. हाँ, कुछ ना कुछ उसमें साइकोलॉजी। सो विधि, उससे बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, तुम एब्सोल्युटली नॉर्मल हो जिस तरह बिहेव कर रही हो। और बस ठीक है, थोड़ा ऑब्जर्वेंट रहना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को देखना पड़ेगा कि भाई मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, या कोई मुझे इंस्टिगेट कर रहा है, या वो एक गेम भी होता है जिसको ट्रांजैक्शन एनालिसिस में बोलते हैं कौन का मतलब जैसा कि वो आपके पास ही काम करती है बीजी। हाँ जी। हाँ, तो कभी क्या होता है कि एक इंसान जो है ना, वो कुछ उससे बुलवाना चाहता है, तो एक कौन फेंकता है। झगड़ा करने का भी एक कौन होता है कि विधि ये क्या कर रही हो, समझो कुछ उसने हड़बड़ कर दी, कुछ उसको बोलने की मेथड भी अलग हो सकती है, लेकिन मुंह से हमारे निकला ये क्या कर रही हो, तो वो कौन आपने फेंका और उसके तो उससे पैर जाके अटक गई, क्या कर रही हूं मैं, कुछ भी तो नहीं, तो ऐसा क्यों किया। अब सेकंड कौन आया, तो ये जैसे कौन हो गया, उसको बोलते गेम। अब वो गेम स्टार्ट हुआ, अच्छा। तो ये गेम हुआ है जिसका एट द एंड क्या होता है, दोनों को नेगेटिव स्ट्रोक मिलते हैं। हम्म। तो ये एक बड़ी अच्छी बुक है, इट इज कॉल्ड गेम पीपल प्ले। Yeah, games that people play. पीपल प्ले, तो वो कई बार Earnick Berne. हम लोग Earnick कई बार, Berne ना? हाँ ये कहीं पर, तो कई बार है ना, हम है ना एडिक्टिव हो जाते हैं उस गेम के। Correct. गेम, ब्लेम लेना, ब्लेम देना, यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, कई गेम्स होते हैं उसके। तो कई बार अब हमें हमारे ये, अब आपको बता दूं, यहाँ पे विधि है और आवीज है और पहले निधि थी। अब तीनों का ये प्रॉब्लम है कि उनको स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम होती है, और मैं जो बोल रही हूँ ना, मुझे बहुत पेशेंटली 10 बार बोलना पड़ता है। सो मैं हमेशा जब कोई मिस्टेक होता है ना, तो मैं बोल रही हूँ तू भी पागल, मैं भी पागल, वो भी पागल, पर इस पागलपन में हमारा काम हो जाता है। तो ये हमारा कौन है। नहीं, ये और कौन हम क्या, सब हंसते हैं। या ये कौन कैसे मालूम है क्या, मैं बताता हूँ कि अननोइंगली स्पेलिंग मिस्टेक करना, हालांकि वो उसको स्पेलिंग आती है, ऐसा नहीं कि उसको स्पेलिंग नहीं आती। अगर आप 4 दिन पीछे गए, 10 दिन पीछे गए, तो वो स्पेलिंग उसे करेक्ट लिखी है। लेकिन उसमें क्या है, कई बार है ना, हमको नेगेटिव स्ट्रोक में मजा आता है, हाँ। तो हम है ना अननोइंगली मिस्टेक करते हैं, और फिर हमको जब नेगेटिव स्ट्रोक मिलता है तो हमको लगता है यार मेरे को क्यों बोलते लोग, यार मैंने क्या इतना सा किया, बट एक्चुअली हमने ही क्रिएट किया है टू गेट दैट या नेगेटिव या स्ट्रोक। या आप एक और बात निधि की, आज विधि तेरी वाट लगी है, बट नहीं बहुत अच्छी वाट लगी है, बहुत अच्छी वाट लगी है। क्योंकि ये बात भी आप वो सभी चीजें बोल रहे जो मैं हाईलाइट करना चाहती थी इसके साथ में, बट मुझे समय नहीं मिलता था। तो आपने बहुत अच्छी तरह से एक एक बात निकाली है उसके दिमाग में से। तो ये जो मजा आता है ना, शी एक्चुअली डज आ बैल मुझे मार, जो आप बोल रहे हैं ना, बिकॉज वो कंफर्ट इन द पेन इतना हो गया है कि उसको उसी में कंफर्ट फील होता है। तो मेरे ख्याल से इसका सिंपल सा विधि इसका सिंपल तरीका क्या मालूम है क्या, खुद को डिक्लेयर करना है कि मैं आज के बाद मैं पेन नहीं लूंगी। तुमको ये, लेकिन हाँ बोलो। जितना भी रिजेक्ट करो बार बार वापस से वही कंडीशन पे आ जाती हूँ। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो मेरी शख्सियत है, जब बार बार आप अपने आप से बोलोगी ना कि मुझे अब दर्द नहीं चाहिए, फिर भी आएगा क्योंकि पुरानी आदत है, ब्रेन को हैबिट हो चुके, तो जैसे आप बोलना शुरू कर दोगे कि मुझे ये दर्द अभी नहीं चाहिए, मुझे ये तकलीफ नहीं चाहिए, और अगर मैंने मिस्टेक की है तो हाँ ठीक है,
मैंने मिस्टेक की, मुझसे गलती हो गई, एंड इट्स परफेक्टली ओके। अगर बीजी तुम्हें डांटती भी है तो ठीक है, वो उसका काम कर रही है, एंड शी इज ऑल्सो परफेक्टली ओके। सर मिस डांटती नहीं, लेकिन मम्मी और पापा का बहुत है, और भाई का। हाँ, तो अभी मम्मी पापा और भाई का कैसा है ना, इनको आप बदल नहीं सकते, नहीं। बराबर। तो इसके अंदर एक है कि अगर आपने ये सोचना शुरू कर दी कि बेचारे, उनको नहीं मालूम कि कैसी बात करना चाहिए। सर वैसे करके बहुत बार इग्नोर किया, फिर भी बार बार गुस्सा दिला देते हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूं आपसे, वो करते रहेंगे, आप उनको बदल नहीं सकती। हाँ। जिंदगी में आप सर पटक लो, उनको चेंज नहीं कर सकती। खाली आपके हाथ में क्या है कि आप अपने आप को चेंज कैसा कर सकते। और चेंज करने का सिंपल मेथड है, जो स्पिरिचुअल अभी मैं बता रहा हूँ, जो लाइन में बता रहा हूँ, कि एक्सेप्ट इट, कि हाँ मेरे पापा ऐसे है, मेरी मम्मी ऐसी है, मेरा भाई ऐसा है, और कुछ नहीं हो सकता इसका। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरा उनके लिए दर्द, मेरा उनके लिए जो एक लगाव है, वो कम नहीं होगा। ये जैसे तुम सोचना शुरू कर दोगे ना, तो हो सकता है उनके अंदर चेंज है, क्योंकि वो जब कुछ बोलते हैं और आप जवाब ही नहीं दोगे, तो उनके अंदर बोले अरे ये जवाब, क्योंकि जब तक गेम शुरू कब होता पता है, उन्होंने कुछ बोले, तुमने कुछ बोला, उन्होंने कुछ, और मजा आते 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 आधा वो पौना बॉल घंटा। फेंकते रहते हैं। हाँ, तो उसके आधे घंटे के बाद अभी बस, अभी आज हाँ। गेम खत्म हो गया। तो स्पिरिचुअली प्रोग्राम में हम लोग इसे कहते हैं कि आपके अंदर एक पेन बॉडी रहती है, जिसको पेन की जरूरत, जैसे उसको भूख लगती है वो बाहर आती है, झगड़ा करवाती है, वो खुराक ले लेती है पेन का, फिर जाके सो जाती है। फिर थोड़े देर टाइम बाद, एक दो दिन बाद, किसी के 4 घंटे बाद फिर उठती, भूख लगी भूख लगी भूख लगी, फिर कुछ बोलो, फिर कुछ खाओ। तो ये स्पिरिचुअली में, स्पिरिचुअलिटी के प्रोग्राम में मैंने ये भी देखा है कि हमारे अंदर एक पेन बॉडी भी रहती है, जिसको पेन चाहिए। और जब आपने बोले कि जैसे वो पेन बॉडी पेन मांगने आ गई, और आप बोले कि नहीं देना है पेन, मुझे मुझे नहीं चाहिए पेन, ये जैसे आप बोलना शुरू कर देते, मुझे नहीं झगड़ा करना है, मुझे नहीं जवाब देना है, मुझे सीखना है, अब मैं और अच्छे इंसान कैसे बन सकती, मैं और कैसे मोहब्बती बन सकती, मैं और कैसे लोगों को, और उनके दर्द को मैं कैसे समझ सकती हूँ। अगर भाई डांटते तो कुछ दर्द है वहां उसका, माँ बाप का कोई दर्द है, वो दर्द देखने की कोशिश करो, क्या दर्द है, क्यों ऐसा कर रहे, क्या तकलीफ है इन्हें, और इनकी तकलीफ में कैसे दूर कर सकती। ये जैसे तुम सोचना शुरू कर दोगे ना, तुम्हारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, बिलीव। एंड द थिंग इज, दर्द उसका क्या है कि पेरेंट्स खाने के लिए बोलते हैं, उसको खाना नहीं है। सो वो अच्छा ही करते हैं उसके लिए, बट परसेप्शन जो है वो चेंज हो गया है। सो आई थिंक विधि, अभी तुम समझ रहे हो, जैसे नजर ने कहा था, आप देखो कि उनकी इंटेंशंस क्या है। बहुत अच्छे इंटेंशंस है इनके, इतना प्यार करते हैं उसको, उसके लिए इतना कुछ करते हैं कि क्या मैं बोलूं। शी हैज डोटिंग पेरेंट्स, डोटिंग पेरेंट्स। बट जैसे आपने बोला ना, वो पेन का आदत हो गया है, तो हर चीज को वो पेन लेने के लिए उसको कंफर्ट फील होता है, शी फील सिक्योर्ड इन दैट। बट बेटा, दैट इज नॉट द वे ऑफ लिविंग। इन्होंने इतनी अच्छी बात कही है, सो उसको अडॉप्ट करो, आपके अडल्ट को जागरूक करो। मिस लेकिन मम्मी पापा और वो अनुष जब मस्ती के मूड में रहते हैं ना, तब मेरे पास आते हैं, और तब मेरा मूड नहीं रहता है ना, तो फिर मैं गुस्सा कर देती हूँ थोड़ा सा। आइंदा से बाद में वो लोग मुझसे कभी अच्छे से पेश नहीं आते। आज भी ऐसे ही हुआ। अभी ना ना अनुष को दो स्टॉप चार बजे कंप्लेनिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग, नो कंप्लेनिंग, नो कंपेयरिंग, नो हाँ, कंट्रोलिंग, नो ब्लेमिंग। गुस्सा कंट्रोल कर रही हूँ मैं अभी तक। मैनेज कर रही है, तो कंट्रोल नहीं कर रही है, मैनेज कर रही कंट्रोल कर रही हूँ, वरना मन करे कि जाके उसे फोड़ दूँ। कंट्रोल कर रही हूँ गुस्सा। अभी समझो गुस्से को, जैसे इन्होंने कहा ना, आपके गुस्से को समझो। हाँ। Thank you, Vidhi. I would like to take Kanishka. Kanishka, this dialogue that we had right now about a parent, adult, and child, does it ring a chord in your mind where you can relate some of the things to yourself, or if you have any questions regarding the same?
Something I can relate. Think, Hmm. yeah. So, do you understand if there are times when you attach yourself to the pain because it is comfortable to remain in that pain? Yeah, that's something I relate. Correct. So that is the time when you can actually tell yourself to shift your perception and decide to operate from the adult level. Okay. Yeah. Wonderful. Yes, Tanush. Anything coming to you? No, ma'am, not really. Okay. So, Nazar, it was really great having you with us here today. जाते जाते सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा डायलॉग है जो आप हमको दे सकते हैं, ऑडियंस को दे सकते हैं, जिससे हम इस टॉक्स को कंक्लूड करें एंड गो विद दैट मैसेज, इट वुड बी रियली ग्रेट. आपका म्यूटेड है, आप म्यूटेड हो. तो यहाँ खासकर विधि या सबके लिए एक ही डायलॉग, मैं जो रियल प्रैक्टिकल डायलॉग जो मेरे समझ में आया कि पहली बात तो एक मिनट मुझे और आर्टिकुलेट नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक योर टाइम. करके वन उसको ये कर ले. I'll just give you a moment. I'll Yeah. just share with the audience our next schedule. You can Yeah. take your time. नहीं, हो गया मेरा हो गया. उसके अंदर पहली बात है ना, मैं क्यों इतनी खराब हूँ, मैं क्यों इतना बुरा हूँ, ये जो कंटिन्यूस आता है ना कि मेरे को गुस्सा आता है, मैं क्यों इतनी अपने आप को सेल्फ ब्लेम ज्यादा लोग करते हैं 90% टाइम, है ना, Correct. कि कुछ मेरे में गलती है, कुछ मुझ में गलती है. सो पहली बात तो एक लाइन आप जो डायलॉग है वो मैं बोलता, आई एम गुड एज आई एम. ये लाइन अगर आप बोलोगे ना तो कई किस्म के दर्द कम हो जाएंगे. आई एम गुड एज आई एम. मैं भगवान नहीं हूँ, मुझसे गलतियां हो सकती है, मैं सॉरी भी बोल सकती हूँ और कोई मुझे सॉरी बोले तो अच्छा भी लगेगा, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ. बट मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ. ये एक डायलॉग अगर आपने प्रिंट कर लिया अपने, तो आपकी जिंदगी सुखमय हो जाएगी. ये मेरा आपसे वादा है. Wonderful. So let us all together say, I am good the way I am. आई एम Together. गुड एज आई एम, द वे नहीं, एज आई एम. I am good as I am. हाँ, I am good as I Good as am. I am. I am good as I am. And you can also say, I am enough. You can also add, I am enough. So I think with these two concluding statements, we can end this show today. And yes, Nazar, once again, thank you so much for adding so much value to the secrets of living a full life. God bless you, and hope to see Thanks you a lot. again in our show Yeah. whenever Thank you you. are free. Yeah, thanks a lot. Thank you so much. You gave me opportunity to communicate, to share my views, and I want to make this world beautiful. So I got an opportunity to transform or to give some good thing. कुछ अच्छी बातें लोगों को बताओ और उनकी जिंदगी अगर अच्छी हो जाएगी तो वो मेरे लिए बहुत satisfying thing है. Thank you for BG for giving me this opportunity. Thanks a lot. God Sir, bless I would like to extend this invitation also to our live class. We have it on Mondays and Fridays from 5 p.m. to 6:30 p.m. you. Okay. So do let me know when you would like to come and Sure. share your wisdom with all our students. Sure. Thanks a lot. God bless you all. Thank you so much. You have been watching this. Please continue, share, like, subscribe to this channel so that you may add more value to people's lives. And yes, we will be coming back every Wednesday, 8:30 to 9:30 p.m. And in case we miss it, definitely a promise to you to bring it on Thursday, the same time, 8:30 to 9:30. Thank you all so much. Good night and meet you tomorrow. God bless. God bless.